नमस्ते सभी को स्वागत किया है मेरे यूट्यूब चैनल से। और बात करेंगे आप लोगों से स्टॉक मार्केट के बारे में। और आप लोगों ने देखा स्टॉक टू वॉच फॉर जन 19, और आप लोगों ने देखा रेल, HDFC बैंक, ICICI बैंक, विप्रो, L&T फाइनेंस, CG पावर एंड मोर। और सभी को आप लोगों ने देखा जो स्टॉक के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं आज। और द मेजर निफ्टी 50 components, Reliance Industry, HDFC Bank and ICICI Bank are the most important stock to watch for Monday's trading session for January 19. Apart from this whole host of mid-sized banking names, IT stocks, SUSE, Wipro and Tech Mahindra, along with the new Tech and CC Power will be also in focus. और आप लोगों ने देखा रिलायंस इंडस्ट्री रेल पोस्ट Q3 नेट प्रॉफिट ऑफ रेंज 18,645 करोड़, लीड बाय डिजिटल सर्विस एंड ऑयल टू केमिकल रेवेन्यू रोज टू 2.65 लाख करोड़ विथ EBITDA at 46,018 करोड़. O2C earning improve on stronger fuel margin and higher Geo BP volumes. ICICI Bank Q3 net profit fell 0% to 11% 318 crore, while net interest income rose 7.7%. Provision increase after RBI directed classification adjustment and agricultural priority sector loans. The board also improved the MD and CEO extension. और आप लोगों ने देखा जो मार्केट का ड्राइव है, आप लोगों ने देखा स्टॉक मार्केट के बारे में डिस्कस कर रहा है। और जो रेल, HDFC बैंक, ICICI बैंक, विप्रो, L&T फाइनेंस, CG पावर एंड मोर जो कंपनी है आप लोगों ने देखा। अभी को जो मार्केट आप लोगों ने Q3 का रिजल्ट के बाद क्या हुआ इस बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा है। और आप लोगों ने देख पा रहे हैं और आप लोगों ने देखा जो ICICI बैंक Q3 का नेट प्रॉफिट फेल 4% हो रहा है और 211% 318 करोड़, while net interest income rose 7.7%. Provision increase after RBI directed classification adjustment and agriculture priority sector loans.